Hello everyone. So here I am. My name is Vipin, and here I'm now gonna introduce my new bike with you all. And but the twist that we have over here is the bike have already met with an accident. So today I'm gonna start the journey of motor vlogging. Just because just few days back I purchased this GoPro. इसलिए मैं पहले शुरू करना चाह रहा था बट ड्यू टू सम रीजंस आई वाज नॉट एबल टू स्टार्ट बट देयर आर फ्यू पॉइंट्स. कुछ नेगेटिव्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव्स होते हैं. लेट इट बी द नेगेटिव पॉइंट which came into my journey, but doesn't matter. So we'll start from today itself. So let me tell you about the bike first. I purchased this bike on 16th. But 14th Feb, as you all know, that was the day on which I booked this bike. उस दिन बुकिंग कर दी थी मैंने, and then I got this on 16th of February. I was planning it on 14th February, but due to some reasons, it was not available at that moment on the showroom, so I was not able to get it. So yeah, I got it on 16th of February. So this is my first bike which is above 200cc. Before that I was using Pulsar, and then after 16th of February I was also planning to buy some accessories and all. So yes, I also got a new helmet which is of Exer. Right now I don't have it, but yeah, definitely I'm gonna show you in the next few vlogs. You'll be able to see it very soon. And now if I tell you more about this accessories and all. So the helmet that I bought, which is Exer helmet, so I got it from Delhi itself. So last Sunday I got it, and further ahead I was also planning to buy a few more accessories as well. So मैंने कुछ research भी किया, देखा Bluetooth and all. So I'll also get them all, but yeah. So while I am getting these accessories day by day, जैसे कि Sunday, Saturday Sunday मेरे पास फ्री होता है. So मैंने सोचा कि let us plan on Saturday Sunday itself, just because मैं फ्री रहता हूँ Saturday Sunday. So मैंने सोचा कि let us plan everything जो भी मेरे को परचेस करना है. On every weekend I was thinking of getting the accessories and all. So the last Sunday I was onto the same. So I was in Delhi, and वहाँ पर मैं इसकी lamination, bring it closer. So here मैंने laminations वगैरह कराई थी इसकी, and the lamination was all done. So 3 घंटे लगे overall if I tell you about the lamination part and all. So let me give you a basically the view. चारों तरफ से एक बार देख लेते हैं बाइक को. The damage क्या क्या आया है बाइक पर. So you all can see that. यहाँ पर जो आगे इसका डिज़ाइन का पार्ट रहता है वो Duke 390 वाला पार्ट. I do have that part. मैंने इसको फेंका नहीं, घर पर रखा है. So यहाँ से टूट चुका है, बट उसको रिपेयर कराना है अभी मेरे को. And apart from that, few scratches and all. But the thing is the build quality. अगर मैं बात करूँ तुमसे build quality की, अगर मैं बात करूँ तो build quality is amazing. You all can see that. वैसे देखा जाए तो accident ज़्यादा बड़ा नहीं था. It was a small accident, but impact यहाँ पर पड़ा, and everything is working completely fine. समझ रहे हो? जो इसके I think इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स हैं अंदर से, वो थोड़े से गड़बड़ा गए, एंड फ्यू मोर थिंग्स एज वेल. बट ओवरऑल अगर आप देखोगे, सो इंजन एंड ऑल, सो एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन. सो दैट वाज अ लिटिल इंट्रो अबाउट दिस स्टार्ट ऑफ माई जर्नी. सो आई नो ये पार्ट थोड़ा सा एक्सीडेंट है. आई एम हैविंग दिस प्लास्टर एंड ऑल, so in front of you all, but the thing is यार मेरे को स्टार्ट करना था, and everybody was यार थोड़ा ठीक हो जा, थोड़ा टाइम ले ले. I was ठीक है यार, मतलब
कभी तो स्टार्ट करना ही है, लेट इट बी टुडे. सो we'll definitely gonna plan few things ahead as well, and देखते हैं कहाँ से कहाँ तक की जर्नी नेक्स्ट हम लोग प्लान करेंगे. बट या आई एम स्टिल इन द रिकवरी फेज, सो देखते हैं कितना टाइम और लगता है. बट आई एम गोना लाइक शो यू एवरी डे अगर कुछ like whatever we are like going through, whether it is an insurance part or any other things that I am going through like about the bike, and also we'll definitely gonna discuss, and you all will love this part. And this was overbought जो मैं आपको बताना चाह रहा था, and we will meet soon in the next vlog. Till then, bye bye.